Hi all the students, welcome once again. आज का जो सेट है स्टूडेंट्स, it is not purely based on LR, but it's a mix of DI plus LR. And वैसे भी कैट में स्टूडेंट्स पिछले कुछ सालों से टिपिकल DI के क्वेश्चन बहुत कम हो चुके हैं. Even in the question of DI, a bit of reasoning is always involved. और आज का जो सेट है स्टूडेंट्स, it is very easy. Okay, truly, it is not so tough. ये मत मान के चलो कि कैट के सारे सेट बहुत टफ होते हैं, अंडरस्टैंड. Okay, कई बार ये परसेप्शन लेकर अपन चलते हैं. And I have seen students, even if the set is easy, they think like, sir, CAT का question इतना easy थोड़ी हो सकता है. That means there is some twist which we are not able to understand. But believe me, sometimes the questions may not be so tough. Okay? चलो आज का question भी student बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है. There is a bar graph given to us and some data are given to us. एक बार pause करके अच्छी तरह से इसको समझ लो. And there are 3 questions on the basis of this set. Okay, shall I show the questions? Yes. ये तीनों questions हैं. If you people have gone through the data, you can pause it and you can try solving these questions. चलो, अब students start करते हैं इसको solve करना. Let us first try to understand what this bar graph talks about. Fresh and Refresh are 2 brands of soft drinks in a local market. Okay. Okay, so 2 brands हैं. Refresh is a new brand introduced in 2015. Okay, this is Refresh and this is Fresh. Okay, तो 2015 में first time Refresh हमने introduce किया. While Fresh has been there in the market since 2011, but हमारा जो data students वो 2013 से start हो रहा है. Okay, understand. Now, both these brands are available only in only 1 liter bottles. That's okay. For Fresh, 20% of the bottles are disposed of after exactly 2 years from the date of manufacture, while the rest continue to be used. For Refresh, 10% of the bottles are disposed of after exactly 1 year from the date of manufacture, while the rest continue to be used. So Fresh में students, people understand, जितनी बॉटल्स का हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका 20% अपन डिस्पोज करते हैं 2 साल के बाद. और Refresh में स्टूडेंट्स जितना हमने मैन्युफैक्चर किया उसका 10% हम डिस्पोज करते हैं आफ्टर 1 ईयर. मुझे याद आता है स्टूडेंट्स एक सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन था कैट 2004 में. अब स्टूडेंट्स कैट पढ़ते हुए पढ़ाते हुए ऑलमोस्ट 22 ईयर्स आई हैव कंप्लीटेड. सो आई नो दैट पिछले 20 सालों में 22 सालों में जितने कैट के क्वेश्चन पेपर्स बने मैं आपको फिंगर टिप्स पर बता सकता हूँ कौन सा क्वेश्चन किस पर्टिकुलर ईयर में था. सो देयर वाज अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन इन कैट 2004. एनीवे, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन. Also, it is known that 1000 bottles of Fresh were disposed of in 2014. So 2014 में students 1000 bottles of Fresh हमने dispose किया. Okay, definitely 14 में मैं किसे dispose करूँगा? जिसको मैंने 2012 में मैन्युफैक्चर किया उसका 20%. ओके, तो स्टूडेंट्स हमने 2014 में 1000 बॉटल्स फ्रेश ब्रांड डिस्पोज किया. The following bar graph shows the number of bottles of Fresh and Refresh in use since 2013 as at the end of each year. Note, all bottles are used right from the year in which they are manufactured and continue to be used unless they are disposed. And the bottles used for both the brands are distinct. You people do understand one thing. कभी भी students आप data को पढ़ो ना, at that time don't be in a hurry. बहुत patience के साथ and बहुत ही open mind के साथ. You people have to understand the data. So that is the reason मैं data पढ़ने में हमेशा 1 या 2 मिनट एक्स्ट्रा लेता हूँ. But मुझे लगता है कि वो 2-4 मिनट कहीं पर भी सेव हो जाते हैं. But I see many of the students, they are always in a rush. तो बेटा data को समझने में don't be in a rush. Okay? अब पूरी तरह से डेटा समझ में आ गया है. अब स्टूडेंट्स हम तैयार हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. नाउ सी स्टूडेंट्स, क्या क्या हमने पढ़ा था एक बार अपन नोट कर लेते हैं. फ्रेश ब्रांड 20% डिस्पोज होगा आफ्टर 2 इयर्स. ओके, एंड Refresh ब्रांड 10% हम डिस्पोज करेंगे आफ्टर 1 ईयर. ओके, एंड 2014 में फ्रेश ब्रांड के 1000 बॉटल्स वी पीपल आर डिस्पोजिंग. ओके, डन.
चलिए आइए स्टूडेंट्स, अब इस बार ग्राफ में ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं सकता. आई हैव टू डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. सो द बेस्ट पार्ट विद सच क्वेश्चंस, ये जो बीआई के क्वेश्चंस होते हैं, इनमें सबसे अच्छी बात क्या है, फटाफट अपने क्वेश्चन को एक बार पढ़ा, स्ट्रेट अवे यू पीपल कैन कम ऑन द क्वेश्चंस. एक बार डेटा को समझा एंड डायरेक्टली यू पीपल कैन कम ऑन द क्वेश्चंस. लॉजिकल रीजनिंग में बहुत बार हमें उस पूरे डेटा को डिकोड करना पड़ता है. तो आप देखो कि स्टूडेंट फॉर एग्जांपल लास्ट के 5 मिनट्स बचे हैं. आई नो दैट कि मैं 5 मिनट्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन या पूरे सेट को सॉल्व करना इज नॉट पॉसिबल. माई पीस ऑफ एडवाइजर्स, फाइंड आउट द क्वेश्चंस विच आर ऑफ बीआई टाइप. आप फटाफट उस सेट को समझो. इवन इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑल द क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 or 2 वी पीपल कैन ट्राई. तो लास्ट के 5 मिनट्स में हम 1 या 2 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं. अंडरस्टैंड. चलिए स्टूडेंट्स, कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 1. How many bottles of refresh were manufactured in 2017? एक सबसे important जो information है, that is, I want the people to understand this line. The following bar graph shows the number of bottles of fresh and refresh in use. So people try to understand, ये जो numbers है ना, they are not the numbers which we have manufactured in that year. This is the number which is in use. So it means, अगर कोई bottle हमने last year manufacture की, बट स्टिल दिस ईयर ऑल्सो इट इज इन यूज, तो इस साल के नंबर में ये ऐड हो जाएगा. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की एलिमेंट इन अंडरस्टैंडिंग दिस डेटा. ये जो बार ग्राफ के नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, दीज आर नॉट द नंबर्स विच वी आर मैन्युफैक्चरिंग इन दिस ईयर. दीज आर द नंबर ऑफ बॉटल्स विच आर इन यूज. तो पॉसिबली इनमें से कुछ बॉटल्स का मैन्युफैक्चरिंग लास्ट ईयर भी हो सकता है, लास्ट टू लास्ट ईयर भी हो सकता है. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. ओके, चलिए नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस टेक द क्वेश्चंस. तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ रिफ्रेश वर मैन्युफैक्चर्ड इन 2017? ओके, तो ये रहा रिफ्रेश, सेकेंड वाला बात. सो 2017, हाउ मेनी बॉटल्स आर वी मैन्युफैक्चरिंग? स्टूडेंट्स प्लीज डोंट गिव द आंसर 8500. अरे बेटा अभी तो बताया 8500. व्हाट इज दिस? दिस इज द नंबर विच इज इन यूज. दिस इज नॉट द नंबर विच इज in this is not the number which we have manufactured. So 8500 does not become the correct answer. Now what is the correct answer to understand this? सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने को समझना पड़ेगा. Now you people understand. 2015 में first time this brand was launched and 2015 में there were 2000 bottles in use. अब naturally ये first year है जब ये brand launch हो रहा है. इसका मतलब है ये 2000 बॉटल्स का मैन्युफैक्चरिंग कब होगा? 2015 में. डन. अब स्टूडेंट्स 2015 में जो 2000 बॉटल्स का हमने मैन्युफैक्चरिंग किया, उसका 10% हम डिस्पोज करेंगे 2016 में. 10%, isn't it? Refresh brand 10% will be disposed after 1 year. So 2000 का 10%, that becomes how much? 200. So 200 we will dispose in 2016. So 1800 bottles net carry होगा 2016 में, but the number in use is 4800. Try to understand. 2015 से totally 1800 bottles 2016 में carry forward हो रहा है, but 2016 में the number in use is 4800. तो इसका जो difference है students, that difference is 3000. इसका सीधा सा मतलब है हमने 3000 bottles का manufacturing किया 2016 में. I hope the point is clear. Okay, try to understand this. मैं एक बार वापस समझा देता हूँ. Students understand, 2015 में 2000 bottles were manufactured. So 10% of that, that means 200, we will dispose in 2016. इसका मतलब है 2000 में से 200 को हमने dispose कर दिया. अब बचा कितना? 1800. So 1800 bottles we are carrying forward from 2015. Okay. जबकि 2016 में टोटल नंबर इन यूज इज 4800. अब उनमें से 1800 तो 2015 वाले हैं, तो नेट एडिशन कितना है? 3000. इसका सीधा सा मतलब है स्टूडेंट्स, 3000 बॉटल्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 2016 में. अब इस 3000 का 20%, सॉरी 10%, दैट मीन्स 300. दिस वी आर डिस्पोजिंग इन 2017. सो 3000 ओके में से 300. अब देखो 2016 में टोटल नंबर इन यूज कितना था? 4800. उसमें से 300 को हमने डिस्पोज कर दिया.
इसका मतलब है the number became 4,500 and this number has become 8,500. So you people try to understand. 2016 में 4,800 bottles were in use. उनमें से 300 bottles मैं 2017 में dispose कर देता हूँ. तो बचा कितना? 4,500. अब वैसे तो स्टूडेंट्स 2017 में 4,500 bottles हैं जो 2016 से कैरी फॉरवर्ड हो गया. But 2017 में the number in use is how much? 8,500. So students, this difference of 4,000, this is that number जो हम 2017 में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. I hope the point is clear. So question number 1, the correct answer is 4,000. Sorry, it is the number of bottles, 4,000. Okay, done. I hope the point is clear. Yes, सारे स्टूडेंट्स बस यही सब कुछ है इस पूरे क्वेश्चन में. कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ डिफरेंस निकालते हैं. बट वी पीपल हैव टू एडजस्ट द नंबर ऑफ डिस्पोजल्स ऑल्सो. अगर आपने डिस्पोजल्स को एडजस्ट नहीं किया तो जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग. ओके, चलिए कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. सिंस इट्स इंट्रोडक्शन इन 2015, how many bottles of refresh were disposed of till the end of 2019? ओके, 2019 तक स्टूडेंट्स हम कितनी बॉटल्स को डिस्पोज करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन. सबसे पहले 200 बॉटल्स हमने डिस्पोज किया 2016 में, 300 बॉटल्स हमने डिस्पोज किया 2017 में. नाउ स्टूडेंट्स, यू पीपल अंडरस्टैंड. अभी हमने क्या कैलकुलेट किया था कि 2017 में 4,000 बॉटल्स वी हैव परचेस्ड. 4,000, सो 4,000 का 10% दैट बिकम्स 400. तो 400 हम लोग डिस्पोज करेंगे 2018 में. नाउ यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड. इन टोटल 8,500 यूज में है 2017 में. इस 8,500 में से 400 को माइनस कर दो, सो इट बिकम्स हाउ मच? 8,100. बट द नंबर इज 9,100. दैट मीन्स वी आर परचेजिंग 1,000 बॉटल्स हियर. अब इस 1,000 का 10% वी पीपल विल हैव टू डिस्पोज इन 2019, सो दैट बिकम्स हाउ मच? 100. तो अब आप टोटल करो स्टूडेंट्स, हमने टोटल कितनी रिफ्रेश की बॉटल्स को डिस्पोज किया. सबसे पहले 200, देन 300, 5, देन स्टूडेंट्स 4,000 का 10% दैट इज 400, सो 5 + 4 is 9, and then students 100. So in total 1,000 bottles we people have disposed till 2019. I guess the point is clear. वापस से पॉज करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, हमने जो 2015 में खरीदा उसमें से 10% दैट इज 200. फिर 2016 में हमने 3,000 खरीदा, उसका 10%. फिर 2017 में हमने 4,000 खरीदा, उसका 10%. फिर 2018 में हमने 1,000 खरीदा, उसका 10%. तो इस तरह से अगर मैं कैलकुलेट करूं, द नंबर बिकम स्टूडेंट्स 1,000. कमिंग ऑन द लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ फ्रेश वर मैन्युफैक्चर्ड इन 2016? हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ फ्रेश. चलो, ये पूरा कैलकुलेशन था रिफ्रेश का, and now we people have to discuss about fresh. 2014 में हमने 1,000 बॉटल्स फ्रेश का डिस्पोज किया था. ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2016 में फ्रेश की कितनी बॉटल्स ओके वर मैन्युफैक्चर्ड इन 2016. ओके, नाउ सी, it is 16,200 in use. Here it is 15,000. So if I take the difference is 1,200. But now you people have to understand one thing. मुझे साथ में ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 2016 में मैं फ्रेश ब्रांड की कितनी बॉटल्स को डिस्पोज कर रहा हूँ. तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जितनी बॉटल्स को मैं डिस्पोज करता हूँ वो डिस्पोज करने के बाद देर इज अ राइज ऑफ 1,200. इसका मतलब है ये जो नंबर ऑफ डिस्पोजल्स हैं वो मैं जब तक ऐड नहीं करूंगा, I'll not be able to find out the total number of manufactured bottles. So students, the difference is 1,200, but मुझे ऐड करना पड़ेगा number of disposals of 2016, because इतनी bottles को dispose करने के बाद there is a growth of 1,200. So number of manufactured bottles कितनी होगी? The sum of these two, the difference plus the disposal. So now students, to calculate the disposals, to calculate
So how many bottles of fresh were manufactured in 2016? Now see students, fresh brand, and we know that 2014 में 1000 bottles हमने dispose किया था fresh brand का. So 2016 we need to calculate number of bottles manufactured. So this becomes the fresh brand 16,200 in use, and 2015 में ये number था 15,000. Now सबसे पहला point, 2015 में there were 15,000 bottles in use. अभी वो नंबर कितना हो गया 16,200. इसका मतलब है स्टूडेंट द डिफरेंस इज 1200. ओके, तो डेफिनेटली 1200 बॉटल्स हमने मैन्युफैक्चर की, बट दिस इज नॉट द आंसर. व्हाई दिस इज नॉट द आंसर? बिकॉज वी नीड टू आल्सो कैलकुलेट कि 2016 में हम कितना फ्रेश ब्रांड डिस्पोज कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट समझना, जितना हमने डिस्पोज किया उतना डिस्पोज करने के बाद देयर इज अ राइज ऑफ 1200. तो वो जो नंबर ऑफ डिस्पोजल्स हैं वो भी स्टूडेंट्स हमें ऐड करना पड़ेगा व्हेन इन दिस डिफरेंस. Now, how many bottles of fresh were manufactured in 2016? Okay, so 2016 the number in use is 16,200. 2015 the number in use is 15,000. तो एक तो स्टूडेंट्स इन दोनों का सीधा सा डिफरेंस निकाल लो, प्लस हमें कैलकुलेट करना है 2016 के नंबर ऑफ डिस्पोजल्स. यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैं सिर्फ डिफरेंस निकालता हूँ एंड दैट डिफरेंस इज 1200, सो इफ यू से दैट 1200 इज द आंसर, बिकॉज सर ये डिफरेंस आया कहाँ से? हमने इन बॉटल्स को मैन्युफैक्चर किया, बट स्टूडेंट्स 1200 इज नॉट द करेक्ट आंसर. व्हाई दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर? बिकॉज वी पीपल हैव टू ऐड द नंबर ऑफ डिस्पोजल्स इन 2016. ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन 15,000 बॉटल्स में हमने कुछ डिस्पोज भी तो किया है 2016 में, और वो डिस्पोज करने के बाद देर इज अ राइज ऑफ 1200. सो डोंट यू फील लाइक कि वो जो नंबर ऑफ डिस्पोजल्स हैं वो ऐड करूंगा तब जाकर स्टूडेंट्स मुझे फाइनल आंसर पता चलेगा कि 2016 में कितनी बॉटल्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल इन 15,000 में से, आई डोंट नो व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्पोजल, बट अज्यूम कर लेते हैं कि 15,000 में से 1,000 बॉटल्स में डिस्पोज कर रहा हूँ. सो 1,000 अगर मैं डिस्पोज करता हूँ, दैट मीन्स द नंबर इज 14,000 जो आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. सो नाउ स्टूडेंट्स 14,000 एंड दिस इज 16,200. तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2,200. इसका सीधा सा मतलब ये है, ये जो डिस्पोजल्स हैं दिस हैज टू बी एडेड टू दिस नंबर, देन ओनली स्टूडेंट्स आई गेट द फाइनल आंसर. तो अब ये पूरा क्वेश्चन इस बात पर डिपेंड करता है कि 2016 के नंबर ऑफ डिस्पोजल्स कितने हैं. To calculate the number of disposals of 2016, I need to calculate the number of purchases of 2014. Okay? अब स्टूडेंट्स मुझे नंबर ऑफ परचेजेस निकालने हैं 2014 के. अगेन द सेम लॉजिक, परचेजेस इन द सेंस नंबर ऑफ yes. Coming on the third question, how many bottles of fresh were manufactured in 2016? So 2016, the number in use is 16,200, and 2015 the number in use was 15,000. So if I take the difference, it becomes 1,200. So possibly अगर कोई स्टूडेंट सोचे कि सर the correct answer is 1,200, it is not correct. Because try to understand, in 15,000 bottles में से हमने कुछ bottles को 2016 में dispose भी तो किया होगा, and dispose करने के बाद there is an increase of 1,200. So don't you feel like वो जो नंबर ऑफ बॉटल्स में डिस्पोज कर रहा हूँ दैट हैज टू बी एडेड हियर. ओके, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. मान लेते हैं 15,000 बॉटल्स में से 1,000 बॉटल्स आई एम डिस्पोजिंग इन 2016. तो इसका मतलब है 15 में से 1 तो चला गया, तो बचा कितना? 14,000. तो अब स्टूडेंट्स 14,000 बॉटल्स वी आर कैरिंग फॉरवर्ड फ्रॉम 2015. ओके, whereas the number in use is 16,200. So the difference between 16,200 and 14,000, so that becomes 2,200. इसका मतलब है ये जो डायरेक्ट डिफरेंस है इट इज 1,200, बट वो जो नंबर ऑफ डिस्पोजल्स है 1,000, दैट हैज टू बी एडेड टू फाइनली फाइंड आउट हाउ मेनी बॉटल्स वी आर मैन्युफैक्चरिंग इन 2016.
आई होप द पॉइंट इज क्लियर. कई सारे स्टूडेंट्स इसे नहीं समझ पा रहे हैं. यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड. डिस्पोज करने के बाद देर इज एन इंक्रीज ऑफ 1200. तो जब तक मैं वो डिस्पोजल का नंबर ऐड नहीं करूंगा तब तक स्टूडेंट्स आर नॉट बी एबल टू गेट द फाइनल आंसर. ओके, तो बी केयरफुल. So now students, this complete question depends on what is the number of disposals in 2016. Now the number of disposals in 2016 that actually depends on number of manufacturing in 2014. तो जितनी bottles मैं 2014 में manufacture करूँगा उसका 20% I will be disposing in 2016. तब ये पूरा question shift होकर 2014 पर आ गया. I will have to calculate the number of number of manufactured bottles in 2014. Let us come on that. Again the same logic. 14 में number in use is 13,500 and 13 में 10,000. So what is the difference? 3,500. But this is not the number of manufactured bottles in 2014 because in 10,000 bottles में से हमने कुछ डिस्पोज भी तो किया होगा ना 2014 में. कितना डिस्पोज किया? अब याद करो स्टूडेंट, जो डेटा हमने पढ़ा था उसमें क्लियर कट इट वाज गिवन दैट इन 2014 वी आर डिस्पोजिंग 1000 बॉटल्स. सो यू पीपल अंडरस्टैंड इन 10,000 में से 1000 बॉटल्स हम लोग डिस्पोज कर रहे हैं 2014 में. तो वो जो नंबर ऑफ बॉटल्स हम डिस्पोज कर रहे हैं वो डिस्पोज करने के बाद देयर इज अ राइज ऑफ 3,500. सो डोंट यू फील लाइक दैट 1000 शुड बी एडेड हियर? यस. सो the total number of manufactured bottles will be 4,500. अब इसका 20% मुझे डिस्पोज करना है 2016 में. So 4,500 का 20%, it becomes how much? 900. So 1,200 plus 900. The total number of purchasers, the total number of manufacturing in 2016 will be 2,100. So this becomes the right answer. Okay? So how many bottles of fresh were manufactured in 2016? And the options are given there. Okay. So in 2016, students, fresh brand in use 16,200 bottles. In 2015, in use 15,000 bottles. So naturally 15,000 में से मैंने कुछ डिस्पोज भी किया होगा. ओके, तो बचा हुआ कैरी फॉरवर्ड होगा. एंड वो जो नंबर है दैट नंबर So how many bottles of fresh were manufactured in 2016? So now students see fresh brand 2016, 16,200 bottles are in use, and 2015 में this number was 15,000. So definitely there is a rise of 1,200. Okay, but anyway 1,200 will not be the correct answer. And वैसे भी students अगर मैं options को देखूं तो there is no option which is 1,200. Now what is the logic here? Definitely the logic is the difference is 1,200. So definitely ये तो manufacture होगा ही होगा. But at the same time you people have to understand one thing. हमने 2016 में कुछ bottles को dispose भी तो किया होगा ना. Dispose करने के बाद there is a rise of 1,200. So don't you feel like the number of bottles which we are disposing, that number should be added here to actually calculate the number of manufactured bottles in 2016. I'll explain to you with an example. Assume कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये जो 15,000 बॉटल्स हैं उनमें से 1,000 बॉटल्स हम डिस्पोज करते हैं 2016 में. इसका मतलब है नेट कैरी ऑन कितना हो रहा है? 14,000 एंड द नंबर इज 16,200. सो एक्चुअली हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं 14,000 बट द नंबर इन यूज इज 16,200. So if we take the difference, it becomes how much? 2,200. So that's what I'm doing. The difference is 1,200 and there is a disposal of 1,000. So it becomes how much? 2,200. So you people try to understand one thing. So difference nikalna is not the correct answer. You people will have to find out the difference, but at the same time, you people will have to add the number of disposals in a particular year to actually calculate the total number of manufactured bottles in that year. I hope the point is clear. Okay, वापस से इस पॉइंट को जरूर समझना. तो केवल डिफरेंस नहीं निकालना है, डिफरेंस प्लस डिस्पोजल टू फाइंड आउट हमने कितनी बॉटल्स को मैन्युफैक्चर किया
2016 में. ओके, सो फाइनली स्टूडेंट्स ये जो 1000 था ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था. वी डोंट नो व्हाट इज दैट नंबर, बट 2016 के जो नंबर ऑफ डिस्पोजल्स हैं that actually depends on 2014. Why 2014? Remember, fresh brand, 20% of the bottles, whatever we are manufacturing in 1 year, 20% of those, that number, we are disposing 2 years later. इसका मतलब है 2014 में हमने जितनी बॉटल्स को मैन्युफैक्चर किया उसका 20% हम डिस्पोज करेंगे 2016 में. दैट मीन्स अगर 2014 का मैन्युफैक्चर्ड नंबर आ जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा. तो अब स्टूडेंट्स मेरा पूरा क्वेश्चन इस पर शिफ्ट हो चुका है कि हाउ मेनी बॉटल्स आर वी मैन्युफैक्चरिंग इन 2014. अगेन द सेम लॉजिक, टेक द डिफरेंस, इट इज 3500 प्लस add the disposals. ओके, अब से 2014 में हमने कितनी बॉटल्स को डिस्पोज किया, वेयर इट इज गिवन, गो थ्रू द डेटा, इट इज डायरेक्टली गिवन टू अस, इजंट इट. मैंने मेंशन भी किया था 1000. सो 2014 में फ्रेश ब्रांड की 1000 बॉटल्स में डिस्पोज कर रहा हूँ. तो यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो 10,000 था उनमें से 1000 में डिस्पोज कर रहा हूँ, तो नेट 9000 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, एंड द डिफरेंस इफ आई टेक दैट बिकम्स 4500. ओके, या फिर यूं समझो, द डिफरेंस इज 3500 प्लस डिस्पोजल ऑफ 1000 शुड बी एडेड, सो द नंबर बिकम्स 4500. दिस इज द नंबर ऑफ बॉटल्स which we are manufacturing in 2014. और ये जो 4500 है इसका 20% मैं डिस्पोज करूंगा 2016 में, so इसका 20% that becomes 900. So total number of manufactured bottles 1200 plus 9, so that becomes 2100. The correct answer is second option. So what a wonderful logic this question has. दिखने में क्वेश्चन जितना सिंपल है, इंडीड उतना सिंपल था नहीं. हालांकि बहुत बड़े कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं थे, बट थोड़ा सा ट्रिक था, और ट्रिक को समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आई होप द पॉइंट इज क्लियर. फाइनली ऑल द स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड, इफ यू हैव टू कैलकुलेट कि 2016 में मैंने कितनी बॉटल्स का मैन्युफैक्चरिंग किया, तो सिर्फ डिफरेंस मत देखना, डिफरेंस प्लस डिस्पोजल. ओके, क्योंकि उतनी बॉटल्स को डिस्पोज करने के बाद देयर इज अ राइज ऑफ 1200. So the total number of manufactured bottles in 2016 will be 2100. Okay, so मजा आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को. देखो कितने लॉजिकल एंड ट्रिकी क्वेश्चन भी पीपल आर टेकिंग. तो बस बने रहो हमारे साथ एंड कीप शारिंग योर लव ऑन अस. तो स्टूडेंट्स इन सब वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कीप स्प्रेडिंग द मैसेज. ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू वेरी सून.